अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास है 12th, यूनिट है हमारा अल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। इसके दो टॉपिक्स हमने जूम थ्रू पढ़े हैं, जूम क्लास थ्रू पढ़े हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक जो है इसका, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर फर्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। नंबर फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके लोअर मेंबर्स जो होते हैं दैट इज द मिथाइल क्लोराइड। सपोज मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड वो एग्जिस्ट करते हैं इन द गैसियस फॉर्म। वेल एज अगर हम लेंगे मिथाइल आयोडाइड या हायर मेंबर्स, वो जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। सो नंबर फर्स्ट पॉइंट है लोअर मेंबर्स exist in the gaseous form, while as higher members are sweet smelling liquids. ये फर्स्ट पॉइंट regarding the physical, this first point, that is the first physical property of the alkyl halides को आपने याद ये रखा कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, while as हायर मेंबर्स जो होते हैं they are sweet smelling liquids. नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इनकी, that they are pure, colorless when pure, they are colorless when they are in pure form they are colorless, while as generally the bromides and iodide जो होते हैं वो अटेन करते हैं ब्राउन कलर अगर हम उनको एक्सपोज करेंगे इन द सन लाइट. So they are colorless in the pure state, while as bromides and iodides attain the brown color when they are exposed to light. Second important physical property of these alkyl halides is number 2, when pure, they are colorless, while as bromides and iodides attain brown color when exposed to sunlight. Number third important physical property of these alkyl halides is that they possesses the high boiling points as compared to that of the hydrocarbons from which they are obtained. इनको हम obtain करते हैं from the alkanes. इनका boiling point जो होता है वो ज़्यादा होता है किनसे? अल्केन से, क्योंकि इनमें जो बॉन्ड होता है दैट इज द CX बॉन्ड वो पोलर होता है, वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. Also they possess the high boiling points as compared to that of the alkanes from which they are derived. They possess high boiling points as compared to hydrocarbons. These are some of the important physical properties of the alkyl halides. Now chemical properties of the alkyl halides. लेकिन chemical properties discuss करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि what is the nature of the CX bond. alkyl halides में जो होता है that is R-X
ये R है क्या, दिस एन अल्काइल ग्रुप विच कंसिस्ट्स ऑफ द कार्बन को, सो वी हैव द कार्बन एक्स बॉन्ड। हमें अब ये डिस्कस करना है कि ये कार्बन एक्स बॉन्ड जो है, कार्बन हैलाइड बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड कैसा है। So nature of the, before discussing the chemical properties, we will go through the nature of the CX bond. Nature of C-X bond. जनरली जो ये अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस CX बॉन्ड। ये CX बॉन्ड जो होता है ये पोलर होता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे, अल्केनस जो दीज अल्काइल हैलाइड्स जो है ये रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द CX बॉन्ड। अब ये CX बॉन्ड है क्या? इट्स अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर फर्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे, इट इज अ C-X is a polar covalent bond। C और X के दरमियान, कार्बन और हैलाइड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एंड दिस पोलैरिटी arises ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू। कार्बन और हैलाइड के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसकी वजह से ये बॉन्ड क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। Number second, the polarity arises because of the electronegativity of the C-X bond। C-X bond। Now this, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बिटवीन द कार्बन एंड द हैलाइड। कार्बन जो है एंड हैलाइड जो होता है, इट इज हेलोजन, दे पोजेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कार्बन। अगर ये हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, विद द रिजल्ट इट डेवलप्स द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड देयर इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन। वो जो ये है, दैट सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज देयर। व्हाई सेपरेशन ऑफ चार्जेस? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में क्या है कि हेलोजन जो है, हैलाइड आयन जो है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कार्बन। सो इस पर कौन सी चार्ज चढ़ती है? दैट इज द माइन डेल्टा नेगेटिव, एंड कार्बन पे दैट इज द डेल्टा पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कार्बन जो है इट इज डेल्टा पॉजिटिव। नाउ इट इज अटैक्ड बाय, इन द केमिकल रिएक्शंस इट इज अटैक्ड बाय द रिएजेंट्स। अगर ये पॉजिटिव है तो इस पर कौन सा रिएजेंट अटैक करेगा? ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्जड रिएजेंट, नेगेटिवली डिस्चार्जड स्पीशीज अटैक करेगा, या द न्यूट्रल स्पीशीज विच possess lone pair of electrons। The condition is that in case of the neutral species that they should possess the lone pair of electrons। So this was about the nature of the CX bond। अब ये nature of the CX bond में आपको याद रखना है, कार्बन जो है that is the positively, that possesses the delta positive charge with the result। अगर ये रिएक्शन दिखाएगा, किसके साथ रिएक्शन ये दिखाएगा? those species which possess the negative charge are the species which possess the lone pair of electrons, and such species are called as nucleophiles। वो सो रिएक्शन जो ये कार्बन दिखाएगा किन के साथ दिखाएगा? दैट इज nucleophiles। Now what are nucleophiles? Nucleophiles are the species negatively charged or the neutral species which possess lone pair of electrons, and they generally attack the organic compounds where we have the positive charge on the carbon। So this was about the nature of the CX bond। अब chemical properties of the this alkyl halides। Chemical properties of of alkyl हैलाइड्स। अब हमें डिस्कस करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। आपने अभी याद रखा
कि जो ये कार्बन है it is positively charged and it is always attacked by the negatively charged species or some neutral chemical species which possess lone pair of electrons. Such reactions are called as the nucleophilic reactions. लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड में that is your R-X, यहाँ से आएगा न्यूक्लियोफाइल Nu, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और हैलाइड आयन बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा that is R-Nu प्लस X नेगेटिव। अब जो ये X यहाँ से निकला, न्यूक्लियोफाइल ने इसको सब्स्टिट्यूट किया, मतलब रिप्लेस किया, एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। वो ये है रिएक्शन दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि हैलाइड आयन को सब्स्टिट्यूट किया गया है बाय द न्यूक्लियोफाइल, लेकिन यहाँ पर जो ऐड हो गया दैट इज न्यूक्लियोफाइल, एंड देन द रिएक्शंस आर कॉल्ड nucleophilic substitution reactions. So the important reaction is shown by the alkyl halides और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि हैलाइड आयन को रिप्लेस करता है न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल ने इसको रिप्लेस किया, ऑन दैट बेसिस इट्स कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक। बट कौन सी रिएक्शन हो गई यहाँ पर? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दीज आर द called as the nucleophilic substitution reactions. So the important chemical reactions shown by the alkyl halides are nucleophilic substitution reactions. Some of the important nucleophilic substitution reactions of these alkyl halides are some of the important nucleophilic substitution reactions of alkyl halides are as follows. नंबर फर्स्ट रिएक्शन जो है इनकी दैट्स विद एक्वस KOH। अगर हम एक्वस KOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इनको ऐड करेंगे तो वहां पर क्या बनता है? अल्कोहल्स आर फॉर्मड। यहाँ पर हैलाइड आयन को OH नेगेटिव ग्रुप रिप्लेस करता है, स्पीशीज रिप्लेस करता है, तो रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द अल्कोहल्स। सो द नंबर फर्स्ट द रिएक्शन ऑफ दीज अल्काइल हैलाइड्स इज रिएक्शन विद एक्वस KOH। नंबर फर्स्ट रिएक्शन with aqueous KOH. When alkyl halides R-X are treated with aqueous KOH, alcohols are formed. नीचे हम रिएक्शन लिखेंगे, that is R-X। अब हमने इसको ऐड किया KOH एक्वस, यहाँ पर हैलाइड किसके साथ बाहर निकलेगा? पोटेशियम के साथ बनाएगा, दैट्स -KX, एंड यहाँ पर क्या बनेगा? दैट्स ROH, दैट्स योर अल्कोहल। नंबर सेकेंड रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड। यहाँ पर आप देखो इस रिएक्शन में पोटेशियम पहली वाली रिएक्शन में दैट इज रिएक्शन विद एक्वस KOH। ये एक्वस KOH जब हम किसमें डालते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं तो ये आयोनाइज होके बनाता है पोटेशियम के पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव है, इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इट अटैक्स द कार्बन बिकॉज कार्बन इट पोजेसेस द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को। सो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने हैलाइड आयन को रिप्लेस किया, सो इट बिकम्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर सेकेंड एक्वस। नंबर सेकेंड रिएक्शन जो है इनकी दैट इज रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड। अगर हम पोटेशियम साइनाइड इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? अल्काइल साइनाइड्स आर फॉर्मड। R-X रिएक्शन करो इसकी, दैट्स पोटेशियम साइनाइड के साथ क्या बनेगा? दैट इज R-CN प्लस KX। ये R-CN जो है दैट्स योर अल्काइल साइनाइड, इट्स अ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। नंबर थर्ड इसी तरह से है रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड AgCN।
यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर अल्काइल आइसोसाइनाइड्स आर फॉर्मड। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर क्यों बनता है पोटेशियम अल्काइल साइनाइड और यहाँ पर क्यों बनेगा दैट्स अल्काइल आइसोसाइनाइड, क्योंकि पोटेशियम साइनाइड जो है इट इज एन आयनिक स्पीशीज व्हाइल एज द सिल्वर साइनाइड जो है दैट इज द covalent compound, that's a covalent compound and then it attacks in the, वो हम देखेंगे किसमें, मैकेनिज्म पार्ट में। यहाँ पर आप इतना ही याद रखोगे जो ये सिल्वर साइनाइड है इट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड एंड देन इट अटैक्स द, यहाँ पर जो है इसका नाइट्रोजन जो है इस इट possesses the lone pair of electrons and then it attacks the alkyl halide, the carbon of the alkyl halide and result is the formation of alkyl isocyanide. Reaction that's R dash X reacts with silver cyanide and it results the formation of R dash NC plus AgX. Alkyl isocianides are formed. This is the number 3rd reaction of alkyl halides with silver cyanide. यहाँ पर क्या बनता है, that is alkyl isocianides are formed. अब देखो यहाँ पर है चौथी रिएक्शन, 4th रिएक्शन जो है दैट्स रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया भी क्या है, दैट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब अमोनिया जो है इस पर भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज ए nucleophile and then it replaces the halide ion from the alkyl halide and reaction becomes the nucleophilic substitution reaction. अब हम नंबर 4th पॉइंट जो है दैट्स reaction with अमोनिया NH3। जब हम अमोनिया को ऐड करते हैं किसको, दैट्स अल्काइल हैलाइड को, यहाँ पर क्या बनता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाaternary अमोनियम salts आर फॉर्मड व्हेन अमोनिया NH3 is added to alkyl halides, primary, secondary, tertiary and quaternary ammonium salts are formed. रिएक्शन अब हम दिखाएंगे दैट इज R dash X रिएक्ट किया हमने किसके साथ, अमोनिया के साथ NH3। यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा X के साथ -HX, यहाँ पर क्या बनेगा, दैट्स R dash NH2, दैट इज योर प्राइमरी एमाइन। अब हम इसको और ऐड करेंगे दैट्स अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर क्या बनेगा, दिस X इज विल रिएक्ट विद वन ऑफ द हाइड्रोजन -HX, यहाँ पर बनेगा दैट इज R dash NH dash R, दिस इज योर सेकेंडरी अमाइन। अब थर्ड में भी इसको ऐड हम करने जा रहे हैं दैट्स अल्काइल हैलाइड आयन H के साथ बाहर HX एंड यहाँ पर बनेगा दैट इज R dash N dash R dash R, और इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज R3N, दैट इज टर्शियरी अमाइन। एंड अगर हम टर्शियरी अमाइन को और ऐड करेंगे अल्काइल हैलाइड and it results the formation of R4N positive X negative, this is called as the quaternary ammonium salt. So this was reaction with ammonia where primary, secondary and the tertiary amines are formed. These are some of the important chemical reactions, that is the nucleophilic substitution reactions of alkyl halides. Up depending upon its mechanism, consideration of the kinetic, from the kinetic consideration or from the kinetic point of view, there are these nucleophilic substitution reactions are divided into two categories. One that's called as the bimolecular nucleophilic substitution reactions. Number second that's called as the unimolecular nucleophilic substitution reactions. Bimolecular and unimolecular. Depending upon the
kinetic concentration, comma, the nucleophilic substitution reactions are divided into two categories. Number first, that is the bimolecular nucleophilic substitution reaction, and number second, that is unimolecular nucleophilic substitution reaction. Depending upon the kinetic point or kinetic concentration point of the view, these nucleophilic substitution जो हमने अभी discuss की, they are divided into two categories. One called as the bimolecular nucleophilic substitution reactions, and second that's called as the unimolecular nucleophilic substitution reactions. I think that is all for the today in this video lecture. In the next video lecture, we will discuss the bimolecular nucleophilic substitution reactions and unimolecular nucleophilic substitution reactions. Thank you so much.